Hello friends, welcome back. So in last class, we were discussing about nucleotides. We have also discussed the important functions of nucleotides. उम्मीद करता हूं आपने उन चीज़ों को रिवाइज किया होगा. So now moving to the topic that is polynucleotides or nucleic acids. Okay. Basically, the polynucleotides are the polymer of nucleotides. Various, for example, जैसा इस डायग्राम में बता रखा है as shown in this diagram. This is nucleotide 1, this and this is a nucleotide 2. Nucleotide 1 and nucleotide 2, they are linked by a bond referred to as phosphodiester bond. As we have already seen कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर देयर आर 3 फॉस्फेट्स, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, इस तरीके से हमने बात की थी. देयर आर 3 फॉस्फेट्स. लेट्स से दीज आर बीटा एंड गामा फॉस्फेट एंड दिस is alpha phosphate. During the phosphodiester bond, what happens is that you will study in molecular biology, the 3' OH group, the 3' OH group, the 3' OH group, it attacked on 5' phosphate. इस दौरान the energy rich bond which is between alpha phosphate and beta phosphate provides an energy. That is, alpha phosphate will be a part of phosphodiester bond. जो phosphodiester bond है उसका हिस्सा कौन सा phosphate बनेगा? Alpha phosphate. जबकि beta and gamma phosphate would be released. Now since there would be a ester on both the sides, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि फॉस्फोरस इधर कार्बन के साथ भी एस्टर बना रहा है और इस कार्बन के साथ भी एस्टर बना रहा है. सो दिस बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड इज रेफर्ड टू एज phosphodiester bond. So at every internal place you will find one phosphate group which will provide a negative charge. बीच में जितने भी फॉस्फेट ग्रुप है वह एक सिंगल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराते हैं. इसीलिए जब कभी भी हम आरएनए या डीएनए की बात करते हैं दे बियर अ नेगेटिव चार्ज. टर्मिनस पर देयर कुड बी 3 फॉस्फेट. किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 5' एंड पर 3 फॉस्फेट हो सकते हैं. इंटरनल पोजीशन पर सारे सब जगह पर एक ही फॉस्फेट होगा, फिर कोई 3' एंड होगा. किनारे पर 2 फॉस्फेट भी हो सकते हैं, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है. और 5' एंड पर इस तरह की कंडीशन हो सकती है. देयर मे बी अ सिंगल फॉस्फेट ग्रुप. देन दिस कंडीशन कुड आल्सो बी एक्सपेक्टेड. बट इंटरनल प्लेसेस पर हमेशा देयर वुड बी अ सिंगल फॉस्फेट. और इंटरनल पोजीशन पर जितने भी फॉस्फेट है वह यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं. एट द टर्मिनस 5' end there could be 3 phosphate, there could be 2 phosphate or even there could be a single phosphate. अगर टर्मिनस पर फ्रेंड्स एक ही फॉस्फेट है तो उस कंडीशन के अंदर देयर वुड बी कंट्रीब्यूशन वुड बी -2 चार्ज. जबकि इंटरनल पोजीशन पर हर फॉस्फेट ग्रुप -1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है. टर्मिनस पर अगर 2 फॉस्फेट है तो -3 चार्ज कंट्रीब्यूशन होगा. टर्मिनस पर अगर -3 चार्ज 3 फॉस्फेट है तो -4 चार्ज होगा. दैट इज द सेम कंसेप्ट जो हमने पढ़ा कि ATP -4 होता है क्योंकि ट्राइफॉस्फेट है टर्मिनस पर. ADP -3 होता है बिकॉज देयर आर 2 फॉस्फेट टर्मिनस. AMP इज -2 बिकॉज देयर इज अ सिंगल फॉस्फेट. सो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड
चेन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं, क्योंकि एवरी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विल प्रोवाइड अ यूनिट नेगेटिव चार्ज. So this covalent bond, which is linking the two nucleotide, is referred to as phosphodiester bond. So basically इस मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करने का काम कुछ एंजाइम्स असिस्ट करेंगे और एंजाइम्स को हम कहेंगे पॉलीमरेज. These could be RNA और DNA पॉलीमरेज. राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला RNA पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करने वाला DNA पॉलीमरेज. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछ लिया गया है व्हाट विल बी नेट चार्ज एट pH 7. जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना रखा है इसके ऊपर pH 7 के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा वह कैलकुलेट कर बताएं. थोड़ा सा दिमाग लगाएं और कैलकुलेट करें. आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, क्वेश्चन तो समझ आया ना. व्हाट वुड बी द नेट चार्ज एट pH 7. तो हाउ यू विल कैलकुलेट कि इंटरनल पोजीशन पर जितने भी फॉस्फेट है उनका कंट्रीब्यूशन -1 होगा और टर्मिनस पर एक फॉस्फेट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा -2. नेट चार्ज कितना हो गया -2 प्लस ये 3 और नेगेटिव चार्ज. सो आंसर वुड बी -5. दैट वुड बी द नेट नेगेटिव चार्ज. इन अदर वर्ड्स nucleotides, whether they are ribonucleotides or deoxyribonucleotides, they link together by phosphodiester bond. Only alpha phosphate become a part of phosphodiester bond, while beta and gamma phosphate they are released. Beta gamma phosphate they can be expected at the 5' end, पर internal position पर beta phosphate नहीं होगा. So with this basic, now we are talking about this polymer polynucleotides. They are referred to as nucleic acids. Nucleic acids in general, these are two broad categories: RNA or nucleic acid could be DNA. That is various NTP ribonucleotide triphosphate. If they polymerized, obviously during polymerization pyrophosphate would be released, RNA would be produced. And if there is a polymer of deoxynucleoside triphosphate and a pyrophosphate is released, then the polymer which will be formed would be referred to as DNA. So nucleic acids, these could be RNA type or nucleic acids could be DNA type. Now first talking about RNA, you will study little bit about RNA in molecular biology. RNA, according to present concept, it is believed to be one of the most ancient molecule during evolution. So जो present concept है वह ये बताता है कि जो सबसे पहले मॉलिक्यूल जनरेट हुआ होगा बाय कीमोसिंथेटिक बायोसिंथेसिस, इट इज प्रोबेबली RNA. Then DNA, proteins, lipids, carbohydrates, they would have probably evolved. RNA, it performs various tasks. It is having very high diversity. RNA can act as genetic material, so there are various viruses where the genetic material is RNA, and it is assumed that the RNA genetic material is the ancient genetic material. Later on, due to an instability of RNA was discontinued and DNA was preferred as a genetic material. पर स्टार्टिंग से RNA जेनेटिक मटेरियल था. इवोल्यूशन के दौरान
आरएनए में क्योंकि अनस्टेबिलिटी थी, इसलिए ज्यादातर जगहों पर आरएनए की बजाय डीएनए को ज्यादा प्रेफर किया गया. आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम्स. आरएनए खुद एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं. एंड वेन एवर दे एक्ट एज एन एंजाइम, they are referred to as riboenzymes. Again, catalytic RNA were the first catalyst, biocatalyst. But later on, due to the slow speed of catalysis, limited reaction mechanisms, instability of molecule itself, favored proteinaceous enzyme to replace these RNA enzyme. शुरुआत में सारे कैटलिटिक रोल आरएनए ही करता था, पर आरएनए की कैटलिस्ट की रेट कम थी, स्पेसिसिटी भी कम थी, आरएनए खुद अनस्टेबल था. इसलिए आने वाले समय में जैसे जैसे प्रोटीन इवोल्व होते गए वह आरएनए की जगह लेते गए एज एन एंजाइम. सो RNA, beside this, it also play various other functions. For example, if you talk about messenger RNA, it is having a information. Messenger RNA has a message or information for protein. Protein के लिए information होती है उसके अंदर. अगर आप राइबोसोमल RNA की बात करें तो राइबोसोमल RNA they play a important structural and functional role in ribosomes. So ribosomal RNA भी इसे कहा जाता है. tRNA, also referred to as an adapter molecules, they basically carry amino acid at site of protein synthesis and recognize कोडॉन ऑफ mRNA. मैसेंजर आरएनए में जो कोडॉन होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं. बिसाइड दिस, दीज थ्री मेजर आरएनए कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए होगा, उसके बाद कंसंट्रेशन टीआरएनए की, और उससे भी कम कंसंट्रेशन मैसेंजर आरएनए. But beside these three major RNA, there are various other type of RNA. They are also present in biological system, which you will study in molecular biology, like siRNA and miRNA. They are mainly involved in gene regulation. Gene regulation में वो mainly involved है. Guide RNA is mainly involved in RNA editing. Small nuclear RNA is mainly involved in removal of introns from pre-mRNA. Pre-mRNA is also referred to as heterogeneous RNA. Small nuclear RNA, SNO RNA, small nuclear RNA, it is involved in the processing of rRNA ट्रांसक्रिप्ट्स. जो rRNA ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग के अंदर काम में आते हैं स्नो RNA. सो इस तरीके से there are variety of RNA which are playing important roles. For example, if you further write, there is a cytoplasmic RNA. अगर और बात करना चाहें तो there is a small cytoplasmic RNA. Small cytoplasmic RNA, mainly it is involved in the process of protein targeting.
प्रोटीन टारगेटिंग में ये इन्वॉल्व है. Okay, so these are different type of RNA. You will study much detail about these different form of RNA in molecular biology. Only the major point about the RNA is comparatively RNA is unstable molecule due to presence of free 2' OH group. So RNA की स्टेबिलिटी कम है. Another point is that RNA has more density as compared to DNA due to its compact structure. So these are some of the important points about the RNA. Coming to the DNA. Only the major difference between RNA and DNA is the presence of deoxyribose sugar. So DNA, it is first polymer of deoxyribonucleotides. It's a polymer of deoxyribonucleotide, DNTP. And another thing is that it is comparatively stable molecule. ये एक stable molecule है because it lack free OH group. कोई भी OH group इसमें free नहीं. DNA के ज़्यादा function नहीं है. DNA is known to play one important function, and that is it acts as genetic material. DNA act as a genetic material. It was first time proposed by Griffith. Griffith ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आप सब जानते हैं. यू नो अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय Griffith. He was working on a strain of bacterial strain referred to as Streptococcus. In some books, even it could be written as Diplococcus pneumoniae. And in Streptococcus or Diplococcus pneumoniae, there are two different strains. One is referred to as rough strain, and another is referred to as smooth strain. Rough strain is not able to cause a disease, so that form is referred to as non-virulent, while the smooth strain is able to cause a disease, so it has been named as virulent. So rough strain was lacking any kind of coating, while this smooth strain, you can see it is having a coating surrounding it, a glycocalyx surrounding the bacterial cell wall. If cell wall is exposed, easily it could be recognized by immune system. If cell wall components, they are covered by glycocalyx, then it would be very difficult for an immune system to act against such bacteria, and thus the bacteria will multiply and can cause a disease. So what he observed is that when this rough strain, it is injected into the mouse lives, and if mouse lives, what this suggests is that this bacteria is non-pathogenic, non-virulent form. It is not able to cause a disease. When the smooth strain
of the same bacteria, it is injected in a mouse. माउस में उसको इंजेक्ट किया गया. माउस में इंजेक्ट करने के बाद कुछ दिन से देखने को मिला कि माउस की डेथ. इट मीन्स rough strain is not able to cause a disease, while smooth strain can cause a disease. In next experiment what he did is कि जो स्मूथ स्ट्रेन है, जो स्मूथ स्ट्रेन थी, इसी को हीट का ट्रीटमेंट दे दिया जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाए. और बैक्टीरिया की डेथ होने के बाद इन हीट किल्ड बैक्टीरिया को रैट में इंजेक्ट किया एंड द माउस सर्वाइव्ड. और रीजन वाज वेरी सिंपल, क्योंकि बैक्टीरिया की डेथ हो गई है, इसलिए वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता. सो अप टू नाउ द कंक्लूजन इज दैट रफ स्ट्रेन कैन नॉट कॉज डिजीज एंड सिमिलरली heat killed smooth strain also cannot cause a disease. In one of the experiment, that is the last conclusive experiment, what he did is that he mixed rough strain which is not causing a disease and heat killed smooth strain which also do not cause a disease. It's a mixture of two things. Both of them, they were not causing a disease. Injected in mouse in a hope that there would be no disease, but surprisingly mouse dies. So Griffith proposed an explanation for this. He suggested that although heat killed smooth strain bacteria, they themselves dies, but there is some factor, there is some transforming factor, there is some transforming factor which is left behind, and this transforming factor, it was acquired by or was taken up by a live rough strain. So let's say this is a rough strain bacteria. It has acquired this factor from outside, and once it acquires this factor, the rough strain get transformed into the smooth strain. rough strain खुद ट्रांसफॉर्म किस में हो जाती है? स्मूथ स्ट्रेन में. और स्मूथ स्ट्रेन बन गई तो वो डिजीज कॉज करना शुरू हो गई. सो इसके चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स आ जाता है, रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है और डिजीज होती है. इस फिनोमिनन के लिए ही यूज्ड अ वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. rough strain is being converted to a smooth strain. But so up to now what he said, that there is some kind of transforming factor. There is some kind of transforming factor which was taken up by the rough strain bacteria, and rough strain bacteria get transformed into a smooth strain. And he said that probably the nature of this transforming factor is the transfer factor which has been acquired from outside. He said that probably the nature of this transfer factor is DNA. The logical reason was that it is very difficult for a protein or for any other molecule to tolerate this high temperature, where there is a heat killing of bacteria, but still molecules carry out its functions. So protein can't be a candidate molecule, because when you heat kill all proteins, they get irreversibly denatured. Okay. So what is the nature of a transfer factor? Although it was suggested by the Griffith that it could be a DNA, but later on it was by MacLeod, Avery and McCarthy. They confirmed the nature of transforming factor. MacLeod, Avery, McCarthy. What this is that nature of transforming factor, is DNA. So how they reached to this conclusion, इस नतीजे पर वह कैसे पहुंचे?
उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में ही माना जाता है कि उसके पास कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है. सो हीट किल्ड smooth strain, it has some kind of transforming factor. So there is some kind of transforming factor in heat killed smooth cells. Now, and this factor is taken up by the rough cell bacteria or rough bacteria, and these rough bacteria, they get transformed into a smooth bacteria. But what is the nature of this trans factor? ये trans factor कैसा है? So what he did is Griffith McLeod Avery in first experiment, they carry out a isolation protocol such that lipids, carbohydrates, they could be removed. Now there are proteins. Now mixture will have a protein, it may have RNA and a DNA. Total lipids and sugar has been removed. These three candidate molecules, they have been left behind. Out of this, one of them is probably transforming factor. In one of the tube, what he did is he added a proteinase. Proteinase is an enzyme, or protease is an enzyme which degrades protein. Purpose was that if transforming factor is composed of protein, the transforming factor must be degraded, and once a trans factor has been degraded, then if you keep it with a rough strain should remain rough strain. But when you add a proteinase, so that no protein was there, and you put it with a R strain cell, still S cell appears. What this suggests is ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इज नॉट अ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो था ही नहीं. अगर ट्रांसफर फैक्टर प्रोटीन होता तो फिर अब रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. अगले एक्सपेरिमेंट में व्हाट दे डिड इज दे एडेड एन आरएनएज टू कंफर्म दैट. पहले में प्रोटीन हटाया, दूसरे के अंदर आरएनए को हटाया, प्रोटीन को रखा सेकेंड सेट के अंदर. So in first experiment protein was removed, RNA, DNA would have been there. In second experiment, what they did is they gave a treatment of RNA. And if RNA is transfer factor, now there should be no change. They added an rough cell, still the smooth cell appears. It means RNA is not a transforming factor. In another experiment, what they did is that they kept protein, they kept the RNA, but DNA को डिग्रेड करने के लिए डीएनएज ऐड किया, और उसके बाद वापस रफ सेल को साथ में रखा, कोई स्मूथ सेल अपीयर नहीं हुए. इसका मतलब द नेचर ऑफ ट्रांस फैक्टर वाज डीएनए, क्योंकि डीएनए का ट्रीटमेंट देने से डीएनए डिग्रेड हो गया होगा, और अगर डीएनए डिग्रेड हो जाता है तो फिर अब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा. क्लियर यहां तक बात. So this was experiment of McLeod, Avery and McCarthy. They suggested that the rough strain bacteria acquire a fragment of DNA from the heat killed smooth strain. वह DNA जो उन्होंने बाहर से acquire किया, वह rough strain के क्रोमोसोम के साथ recombine करता है, और ऐसा होने पर उस डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है कि वह बैक्टीरिया अपने चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करे, और एक बार ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन हो गया तो अब वह बैक्टीरिया रफ नहीं कहलाएगा, वह बैक्टीरिया स्मूथ कहलाएगा. सो इट वाज मैक्लियोड, एवरी एंड मैककार्थी. दे सजेस्टेड दैट the factor responsible for the transformation, the information for transformation resides in a DNA. Another, we can say, direct experimental example is further given by Herzey and Chase. So moving to Herzey-Chase experiment.
So just a wait about Hershey-Chase experiment. So now moving to experiment carried out by Hershey and Chase. Hershey and Chase, they actually worked on bacteriophage. And in bacteriophage only there are two different kind of molecules. That is, there is a protein coat. This is protein part, and another is DNA. So out of these two, one molecule has to act as a genetic material. So either it would be protein or either could be a DNA. Bacteriophages are viruses which infect bacteria. Now here what has to be proven, that which molecule is carried from one generation to next generation. यहाँ हमें प्रूव करना है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कौन सा मॉलिक्यूल आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा उसे ही हम जेनेटिक इन्फॉर्म कहेंगे, वही जेनेटिक मटेरियल है that is having a genetic information. So in first experiment what Hershey and Chase did is he took some bacteriophages जिनका कंप्लीट जो प्रोटीन कोट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, कंप्लीट जो प्रोटीन कोट है इसके चारों तरफ प्रोटीन कोट को रेडियो लेबल किया, जो डीएनए है वह नॉर्मल। इस तरीके के बैक्टीरियोफेज, पेरेंट बैक्टीरियोफेज को हमने बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट कराया। व्हाट वाज ऑब्जर्व दैट कि अगर इफ आप सेल को ऑब्जर्व करें तो अब बैक्टीरिया के सेल से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आती, यानी वापस सेंट्रीफ्यूज करें, सुपरनेटेंट को अलग लें, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी है, बट जो पैलेट में बैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं। इसका मतलब जो रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट है वह बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं हो रहा, जो अंदर ही एंटर नहीं हुआ वह जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता। So no radioactive molecule enter into the bacterial cell. In another experiment what they did is इस बार जो फेस का डीएनए था उसको रेडियो लेबल किया, वापस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, सेंट्रीफ्यूज करने पर पैलेट में बैक्टीरिया थे, सुपरनेटेंट में वायरसेस या वायरसेस के वह कंपोनेंट होंगे जो कि बैक्टीरिया में एंटर नहीं होंगे, उनको हटा दिया। फिर वापस बैक्टीरिया को एनालाइज किया गया, क्या बैक्टीरिया के अंदर से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, एंड रेडियो एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। व्हाट सजेस्ट दैट प्रोटीन इज नॉट बीइंग इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरिया, द डीएनए इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरिया। और सिर्फ यही नहीं, यहां से इसके बाद लाइसिस होने के बाद जो बैक्टीरियोफेज आए, इस लाइसिस होने के बाद जो बैक्टीरियोफेज आए, उन बैक्टीरियोफेज दे वर आल्सो शोइंग अ रेडियो एक्टिविटी। इट मींस द रेडियोएक्टिव डीएनए इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये भी रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी इज बीइंग radioactive DNA is being transferred from one generation to next generation. So the thing which enters into bacteria and carry forward to the next generation is DNA, it's not RNA, and this was experimentally proved by Hershey and Chase. Then from bacteria to human and various viruses, DNA is genetic material. Now it is known that from E. coli, that is from E. coli to
yeast to Drosophila to Arabidopsis or human. The genetic material is DNA. That is from, you can say, bacteria, plants, fungus, and animals. All of them, they have a double-stranded DNA as a genetic material. Whether they are cyanobacteria, archaeobacteria, eubacteria, all of them, they have a double-stranded DNA. And even various viruses, they also have double-stranded DNA as a genetic material. For example, T2 bacteriophage, you can take T2 bacteriophage का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लैम्डा फेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी कई सारे एडिनो वायरसेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं. एंड एक्सेप्शनली देयर आर सम केसेस जहां पर जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बजाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दैट इज 5x174 बैक्टीरियोफेज एंड M13 बैक्टीरियोफेज. दीज आर टू एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, वेयर the genome is not double stranded, the genome is single stranded DNA. Viruses में ही you also find some exception where the RNA can be a genetic material. RNA can be genetic material. It was experimentally proved by Frankel, Conrad and Singer's experiment. They were working on two different viruses. One is tobacco mosaic virus. As name suggests, it causes a disease in a tobacco. Another is Holmes ribgrass viruses, which generally leads to a rib disease in a grasses. In both these viruses, they have a protein coat and RNA. उनमें प्रोटीन कोट है और RNA है. यहाँ पर DNA है ही नहीं. जब DNA नहीं है तो फिर जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन काम कर रहा है? This was the question. So they carried out an experiment in which what they did is, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको डिग्रेड किया ताकि प्रोटीन हट जाए, और ये RNA आ गया, दैट इज फ्रॉम टोबैको मोज़ेक वायरस. दूसरा वायरस दैट इज होम्स रिब ग्रास वायरस, उसका भी प्रोटीन को डिसमेंटल किया एंड RNA ले लिया, तो दिस RNA हट गया और यहां से उसने प्रोटीन ले लिया. अब उन्होंने एक मिक्स्ड वायरस को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जिसके अंदर जो RNA वो कॉमन टाइप मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस का था, और उसको चारों तरफ जो प्रोटीन कोट एग्रीगेट कराया, दैट इज टाइप M प्रोटीन, मींस इट इज टेकन फ्रॉम हिप्स रिब ग्रास वायरस. अगर प्रोटीन में इंफॉर्मेशन है डिजीज कॉज करने की, तो पहली बात तो टोबैको में डिजीज होगी, और उससे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो नेक्स्ट वायरस प्रोजेनी आएगी उसके अंदर सब प्रोटीन जिस वायरस का उसी तरह का वायरस वापस जनरेट होना चाहिए. बट व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज दैट जब इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड वायरस को टोबैको के साथ इन्फेक्ट कराया, टोबैको मोज़ेक डिजीज हुई, देयर वाज अ टोबैको मोज़ेक डिजीज, और डिजीज रीजन से वापस वायरस को आइसोलेट किया गया, तो इट वाज फाउंड दैट इट इज हैविंग एन RNA फ्रॉम टोबैको मोज़ेक वायरस as well as protein coat from tobacco mosaic virus. Means RNA is being carried out from one generation to next generation, and the information that what kind of protein should be there surrounding the RNA, this also reside in RNA, not in a protein. So protein is not dictating that what kind of RNA should be there. RNA is being carried from one generation to next generation and is also dictating, यही तय भी कर रहा है, ये डिसाइड भी कर रहा है
कि उसके चारों तरफ प्रोटीन कैसा होगा. So information for disease causing and the information which is being passed, information for production of protein coat, all these things they lie in RNA. Clear? Then there are various examples now where the RNA is genetically modified. Single strand RNA के अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप अब तो कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, चाहे वह सार्स है, चाहे मर्स है, चाहे कोरोना है, सब डेंजरस है. द रीजन इज genetic is RNA and RNA is an unstable genetic material. Even you can take an example of polio virus, you can take an example of almost all retroviruses. These are examples where the genome is single strand RNA. There are some examples where you can find double strand RNA as a genome, especially in Reoviridae or Reovirus family. You will find double strand RNA as a genome. But very rarely RNA is preferred genetic material. The reason is straightforward, because RNA is unstable molecule. Okay, so this is the experiment from which it was confirmed that RNA can also be a genetic material. Then moving further to the structure of DNA. The experimental work for elucidation of DNA structure को पता करने के लिए ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया, जिसकी बेसिस पर आज हम डीएनए के बारे में जानते हैं, द वर्क वाज डन बाय रोजेलिन फ्रैंकलिन and she was working on in Wilkins laboratory. What she did is she obtained a X-ray diffraction of fiber form of DNA. जो fiber form of DNA है उसका X-ray diffraction pattern obtained. And using this information, which was provided by Rosalind Franklin, it was Watson and Crick. They proposed molecular model to explain structure of DNA. So in a coffee shop, they took ball और sticks लिए, उनको add किया according to information which is present in the X-ray diffraction, and they reached to the conclusion about the double-stranded DNA, जिसके बारे में आज हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है. Today we know a very accurate information about this structure. Although prior to Rosalind Franklin, Pauling and various other X-ray crystallographists, they try to give some in structural details over the DNA, but they were not accurate. It was first Watson and Crick who
gave the most appropriate information about the structure of the DNA which occurs in a nucleus or organism. सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन किसने बताई? वॉटसन और क्रिक ने. वॉटसन और क्रिक के मॉडल से पहले चरगफ ने एक रूल दिया था जिसने भी वॉटसन और क्रिक की काफी हेल्प की मॉलिक्यूलर मॉडल देने में. सो व्हाट इज द चरगफ रूल? फर्स्ट, चरगफ रूल, it is applicable only for double stranded DNA or RNA molecules. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए के ऊपर इस मॉडल को अप्लाई नहीं, या इस रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द चरगफ रूल? अगर हम उनको डिस्कस करें तो जो पहली बात चरगफ ने कही कि द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज. ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर बेस कंपोजिशन एक जैसा होगा. 4 तरह के बेसिस हैं पर उनका प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई के अंदर 82 जीसी रेशियो की बात करें तो वो लगभग 0.97 है. तो ह्यूमन के अंदर 82 जीसी का प्रोपोर्शन पता करें तो लगभग 1.53. दैट इज कंपैरेटिवली more GC sequences in E. coli and more AT sequences in human. So the base composition varies from the species to species. But what he observed is that DNA samples isolated from different tissues of a same species has the same base composition. Let's say ह्यूमन के हार्ट से डीएनए, लीवर से डीएनए, किडनी से डीएनए, ब्रेन से डीएनए, ल्यूकोसाइट से डब्ल्यूईसी से डीएनए को आइसोलेट किया जाए, उन सब के अंदर बेस कंपोजिशन सेम होगा. 80 जीसी का प्रोपोर्शन सेम होगा सभी सेल्स. So it is not like that कि kidney cells have different base composition while liver cells they are having a different base composition within a species. So within a species all tissues or all cells they have similar base composition. Varies from species to species but within a species it is a similar in all the cells. Next observation which was made by the Chargaff is कि जो कुछ भी बेस कंपोजिशन है किसी भी स्पीसीज का दिस विल नॉट चेंज विद द टाइम. अगर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर 82 जीसी रेशियो 1.53 है तो यंग स्टेज पे भी यही होगी, मींस एडल्ट स्टेज पर भी सेम रेशियो वुड बी देयर एंड इवन एट द ओल्ड एज द रेशियो वुड बी आल्सो रिमेन सेम. सो विद द टाइम द बेस कंपोजिशन डू नॉट चेंज. बेस कंपोजिशन ओनली चेंजेस फ्रॉम species to species. And most important thing about the Chargaff rule, most important point about the Chargaff rule is he always said that if you see in any species where there is a double strand DNA, the number of adenosine residues is equal to the number of thymidine residues and the number of guanosine residues are equal to number of cytidine residues. The reason is straightforward क्योंकि A T के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, हमें पता है. बट चरगफ ने पहली बार ये बताया किसी भी स्पीसीज में देखो 82 जीसी रेशियो वेरी कर सकता है लेकिन A के बराबर हमेशा T होंगे और G के बराबर हमेशा C होंगे अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है. सो हियर वी कैन से दैट A एक साइड में रखें, T दूसरी तरफ रखें, G इस साइड में रखें, C इधर की तरफ रखें, दीज वुड बी सेम.
यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज में देखें जितने प्यूरिन्स होंगे उतने उतने पैरामिडियंस होंगे. So purines, because they always carry out hydrogen bonding with some kind of pyrimidines, जितने purines होंगे उतने उतने pyrimidines देखने को मिलेंगे. That is about the Chergaff rule. Then this information definitely helped Watson and Crick to give a model for the DNA. इन्होंने एक बात तो समझ आ गई कि A के सामने T होना चाहिए, G के बराबर सामने C होना चाहिए, क्योंकि इनके नंबर है वह बराबर. So now coming to Watson-Crick double helical structure. वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई, वह कुछ इस तरीके की थी कि पहली बात उन्होंने कहा कि इट इज डबल स्टैंडर्ड. There are two anti-parallel polynucleotide strains that wind about a common axis with a right-handed twist to form a double helix. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि there are two strands, and two strands, they are anti-parallel. It is structure is not ladder-like, it is right-handed. So there are two strands. Here you can see this strand 5 prime to 3 prime, and this another strand is 3 prime to 5 prime. So there are two strands. These two strands, they are anti-parallel. Strands, when they are anti-parallel, then only hydrogen bonding they are possible. If the strands they would have been parallel, then hydrogen bonding is not possible. So the first point was, it is a double strand structure, helical structure, and helicity is right-handed. The next point, what this suggests is that the diameter of this helix is almost constant. It remains around 20 angstrom. So diameter of helix is constant, and that is around 20 angstrom. Then he also said that adenine in one strand, it carries out a double hydrogen bond with a thymine. Guanine carries out a triple hydrogen bond with a cytosine, and the bases, they are planar, they are flat, and these bases, they are almost perpendicular to sugar phosphate backbone. So basis है इसके perpendicular है, आप देख सकते हैं sugar phosphate backbone से they are perpendicular. मीन्स जहां पर ये इस तरीके से हो रहा है वहां पर ऐसे बेसिस हो गए, यहां पर इस तरीके से होगा, यहां पर कुछ इस तरीके से. सो दे आर परपेंडिकुलर टू शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ओके, सो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एडेनिन के बराबर थायमिन होते हैं, गुआनिन के बराबर साइटोसिन होते हैं, और बेसिस हैं वो कैसे हैं, प्लेनर बेस पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द nearly perpendicular to the helix axis, but exactly perpendicular to sugar phosphate backbone. Then एक हेलिक्स के अंदर there are around 10.5 base pairs. So there are 10.5 base pair per turn. मीन्स पूरा एक 360 डिग्री टर्न लेने पर लगभग 10.5 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 36 डिग्री के आसपास एक हेलिक्स और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में एंगल है, और 360 डिग्री अराउंड 10 बेस पेयर, मोर अराउंड 10.5 बेस पेयर दे आर रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट पॉइंट व्हाट दे प्रपोज्ड इज द हाइट ऑफ हेलिक्स. The height of helix is one helix where complete
360-degree turn occur, and height of helix is 36 angstrom. The distance between base pairs is around 3.4 angstrom. So 3.4 into 10.5 will come out to be around 36 angstrom. So a helix height is 36 angstrom and the distance between two base pairs is 3.4 angstrom. Then another important point is this helical structure has one major groove and another minor groove. Major groove and minor groove are the places from where the bases they are available, from where the large number of bases they are available, accessible. This is referred to as major groove. On opposite side, comparatively lesser bases they are available, and this is referred to as minor groove. So they have a major and minor groove, and major and minor groove could be represented in this diagram. That is, you can see that here the more bases they are, there is some region from where more bases they are visible. So here from more bases they are visible, and from this region there comparatively lesser number of bases they are visible. So from where you are able to see large number of bases a major groove, from where you is able to see a lesser number of bases is a minor groove. So one is major groove. Major groove is the front side from where comparatively large number of bases is being visualized. Minor groove is back side when it rotates, and from back side if you are able to see few bases, then that is referred to as minor groove. Okay. Most of the proteins they binds to major and minor grooves. Most of DNA binding proteins, they interact through major grooves, and some interact through माइनर ग्रुप. बहुत कम ऐसे होते हैं जो माइनर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे इंटरेक्ट थ्रू द मेजर ग्रुप ऑफ द DNA. So if you try to draw, then from some places you will find a comparatively more number of bases they would be accessible, and the region from where more number of bases they are accessible, that would be referred to as major groove, and opposite to this the side would be referred to as minor groove. The opposite side, which is visible from this side, would be referred to as minor groove. This could be diagrammatically represented over here also. That is major, from major groove side, the front positions, the top positions of nitrogenous bases is available for hydrogen bonding. For example, यहाँ पर guanine cytosine ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ कर रखी है. अगर हम नंबरिंग को ड्रॉ करें या नंबरिंग को रिप्रेजेंट करें तो हियर यू कैन से दिस इज द शुगर, दिस इज 7th position, this is 8th position, and this is 9th position. Then this is the structure of guanine, means it is the first this is the 6th position, this is the first position, this is 2nd position, this is 3rd position, this is 4th position, this is 5th position.
This is first, this is second, this is third, fourth, fifth, and sixth. Again, giving the numbering for here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, the groups which are available for hydrogen bonding for a protein from major group include nitrogen 7, which could act as a hydrogen acceptor. O6, it has 2 lone pairs, 1 lone pair is still free. Then it has a, this is from guanosine side, from cytosine side you are getting a N4, and N4 basically it is acting as a hydrogen donor. Similarly, for the major group of adenine thymine, you are getting a N7 and N6, where N7 is acting as a acceptor, N6 is acting as a donor, and on this side you are getting a O4, which is obviously acting as a acceptor. From minor group, the positions which are available for hydrogen bonding is nitrogen 2 and oxygen 2 from this side, where nitrogen 2 is acting as hydrogen donor, while oxygen 2 is acting as a acceptor. Here from minor group, and even you are also getting this nitrogen 3 and nitrogen 2. Nitrogen 3 is acting as a acceptor, while nitrogen 2 is acting as a donor. In AT minor group, you are getting a nitrogen 3 as a acceptor. Here you are getting a oxygen 2 as a acceptor. So these are some of the positions which are accessible from major group and minor group. Draw this diagram. This is important क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी पोजीशन मेजर ग्रुप से दिखाई देती है और कौन सी पोजीशन माइनर ग्रुप से दिखाई देती है. डायरेक्ट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड. सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. तो आपने ड्रॉ कर लिया. ओके, कुछ पीछे बच रहा है तो बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा. मूविंग फर्दर, नाउ
From Watson-Crick model, you know that distance between two base pair is 3.4 angstrom or 0.34 nanometer. This information can be used for estimating the length of a genome. For example, if someone asks you what would be the total length of human genome, for this you must know that what is the size of human genome. So for the human genome size is, let's say, 3 into 10 to the power 9 base pair. So this is the human genome size. You can also say that it is a C value, size or C value, chromosomal value. What would be its length in a meters? So we know that the distance between the base pair is 3.4 angstrom or 0.34 nanometer. So what you can do is 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर की जगह पर हम लिख सकते हैं 3.4 angstrom, or you can write it like this: 3 into 10 to the power 9 3.4 angstrom का मतलब होता है 10 raised to minus 10 meter, or you can say that 3 into 3.4 will come out to be approximately 10.2. This is plus 9, this is minus 9, you will get 10 raised to minus 1 meter. That would be equivalent to 1.02 meter. So this is the total length of human genome. And if someone asks you the total length of DNA in human cell nucleus, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ह्यूमन है वह डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड है इसका मतलब देयर वुड बी टू कॉपीज ऑफ genome, and size of, or more accurately, length of each genome. Length of genome is approximately 1.02 meter. So total, if there are two copies, then it will be 2.04 meter of DNA in nucleus. Okay, so इस तरीके से हम DNA की लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. वहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारे काम आता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. नाउ डीएनए बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा रिलैक्स्ड फॉर्म में हो कोई जरूरी नहीं. It could be in different topological states. So if some, let's say, plasmid DNA is like this, we will say that it is a relaxed state. This would be referred to as relaxed. And if DNA is somewhat like this, then we will say that it is now supercoiled form, and supercoiling could be negative supercoiling or it could be a positive supercoiling. This could be a supercoiled state.
Now, this what should happen is that normally each 10.5 base pair or 10 base pair must have one helix, also referred to as twist or turn. सो लगभग 10 बेस पेयर है, 10.5 बेस पेयर में एक कंप्लीट टर्न 360 डिग्री का पूरा होना चाहिए. और अगर इस तरह कंडीशन है देन इट वुड बी रेफर्ड टू एज रिलैक्स्ड. बट the each turn may have more number of bases or each turn may have lesser number of bases than expected, or in other words is 10.5 base pair or we can say 36 angstrom must have this much base pairs. If DNA is overwoven, then to accommodate there is positive supercoiling. यदि अगर लगभग मान लें कि कोई डीएनए 360 एंगस्ट्रॉम का है तो उसमें 10 ट्विस्ट होने चाहिए. 10 ट्विस्ट का मतलब 10 हेलिक्स होने चाहिए. लेकिन आपने उसमें 10 की बजाय 11 हेलिक्स भर दी तो एक्स्ट्रा उसमें टेंशन एक्यूमुलेट होगा और उस एक्स्ट्रा टेंशन को एक्यूमुलेट करने के लिए कॉइल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर कॉइलिंग आएगी. जैसे डीएनए इटसेल्फ इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर और कॉइल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ये कॉइलिंग आ गई, इसे कहा जाएगा सुपर कॉइलिंग एंड दैट वुड बी रेफर्ड टू एज पॉजिटिव सुपर कॉइल. और हर सुपर कॉइल के लिए वी यूज अ टर्म रिद. इसे क्या कहेंगे हम? रिद. ट्विस्ट, हर एक कॉइल के लिए ट्विस्ट और हर एक सुपर कॉइल के लिए रिद. सो जनरली आप देखेंगे ahead of replication fork, ahead of replication fork, ahead of replication fork, there is a positively supercoiled DNA. Generally, positively supercoiled DNA inhibit replication process. Replication and transcription both are not favorable. Then DNA may be in underwoven condition. If DNA is in underwoven condition तो भी टेंशन एक्यूमुलेट होगी. मींस अब हम कह सकते हैं 360 एंगस्ट्रॉम में 10 हेलिक्स होनी चाहिए पर वह 9 हेलिक्स कर दो तो भी वहां पर टेंशन एक्यूमुलेट होगी. और उस टेंशन एक्यूमुलेटेड टेंशन को अकोमोडेट करने के लिए again there would be supercoiling and that supercoiling would be referred to as negative supercoiled or it would be referred to as negative ring.
Then if DNA is underwoven, then there is negative supercoil या rib. Most of the DNA most of genomic DNA is kept in negatively supercoiled form. As this particular form facilitates the replication and the transcription process. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही प्रोसेस को फेवर करता है. नाउ डीएनए की टोपोलॉजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज रेफर्ड टू एज लिंकिंग नंबर. लिंकिंग नंबर इज बेसिकली लिंकिंग नंबर, इसको एल के लिखते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन ट्विस्ट प्लस रिद, जहां पर ट्विस्ट नंबर ऑफ कॉइल्स हैं और रिद है वह नंबर ऑफ सुपर कॉइल्स. अब अगर डीएनए नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है तो रिद के आगे साइन माइनस लगेगा. सो लेट्स से आपको कहा कि कोई एक डीएनए है, उसमें 25 ट्विस्ट है और वह इट इज हैविंग 2 नेगेटिव सुपर कॉइल, तो उसका लिंकिंग नंबर कितना होगा? तो नेगेटिव सुपर कॉइल है तो ट्विस्ट प्लस रिद 25 माइनस 2, आंसर लिंकिंग नंबर क्या आ जाएगा? 23. तो इस तरीके से हम अगर पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड होता तो ट्विस्ट के अंदर रिद को ऐड करते, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है तो ट्विस्ट के अंदर रिद को डिडक्ट करेंगे. क्लियर? देन moving further, the stability of DNA, it depends upon variety of factors. One of the major factor जो DNA की stability को decide करता है that is the hydrogen. Major stabilizing factor is hydrogen bonds. That is G and C, it has a triple bond. It has a triple hydrogen bond. While A and T, they are having a only double hydrogen bond. So that's why we generally say that GC rich DNA is more stable as compared to AT rich DNA. तो मेजर फैक्टर जो डिसाइड करता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अनदर जो डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करता है दैट इज सॉल्ट्स लाइक KCl, NaCl, etc., ammonium sulfate, which
provides monovalent cation, which provides either monovalent cations like sodium, potassium, ammonium ion. What these ions do, so monovalent cation है sodium, potassium, ammonium, they basically, as we have already discussed when we were studying the interactions, they shield repulsive negative charge of phosphate backbone of phosphate backbone of DNA strands. तो डीएनए के अंदर, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, डीएनए के अंदर देयर आर नेगेटिव चार्ज ऑन दिस साइड, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस साइड, विच इज कैरिंग आउट रिपल्शन. सो इस रिपल्शन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय बाइंडिंग टू सम monovalent like sodium ion. If it start interacting with this negative charge, somehow it could be shielded or it could be reduced. So hydrogen bonding तो उसको stabilize कर ही रही है. Hydrogen bonding is there, which is carrying out which is one of the major stabilizing interaction. So beside hydrogen bonding is no doubt there, but beside hydrogen bonding there are also some repulsive forces, and in repulsive forces को न्यूट्रलाइज करने का काम कोई मोनोवेलेंट कैटायन है वह करता है. Then some other factors include base stacking interactions, which mainly include a combination of two forces, that is hydrophobic interaction and van der Waal interactions. They also stabilize the DNA. More is base stacking interactions, better would be the stability of DNA. जनरली जब प्यूरिन एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस सेम स्ट्रैंड होते हैं, जी 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 ए जी जी, तो स्टैकिंग बेटर होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू देयर इज वन प्यूरिन, देन देयर इज अ pyrimidine, अगेन देयर इज अ प्यूरिन, देन देयर इज अ pyrimidine. Stacking will not be better. Hydrogen bonds, they are responsible for holding the two different strands, while the stability within a one strand, it is provided by base stacking. So within a strand, the stability is provided by base stacking. Between the two strands, which is holding the double-stranded DNA structure, then double-stranded DNA structure is stabilized by hydrogen bonding. And here we can also mention some destabilizing factors. Destabilizers, these include, first you can keep over here is high temperature will destabilize the structure of DNA. Then various denaturating agents, like urea, formamide, etc. They also destabilize the DNA. Even you can put over here, if the DNA is having more
mismatch, that will also destabilize the DNA. So high temperature, denaturing agents, various mismatch, strong acidic or alkaline conditions. These all factors, they destabilize the DNA. Strong acidic या alkaline condition, there is a protonation or a deprotonation of nitrogenous bases, due to which their stability, interactions and stability is influenced. वह influence हो जाती. So these are some of the factors which are responsible for stability, and we have also discussed some factors which are some most common factors which destabilize the structure of double-stranded DNA. Then DNA may have different type of conformations. Some well-known conformation of the DNA are A form, B form and Z form. These different conformations of the DNA, basically they are due to rotation around 7 different bonds. So rotation around these 7 different bonds, they may allow our DNA to adopt a different conformations, and major conformations are A, B and Z. The important bonds within a main phosphate sugar backbone where rotation is allowed, that is, this is a phosphodiester bond of, let's say, one nucleotide, and this is a phosphodiester bond which is starting for a second nucleotide. This is one nucleotide unit from phosphodiester bond to phosphodiester bond. The important bonds are alpha, this is between phosphate and oxygen, beta, which is between oxygen and carbon 5, gamma, which is between carbon 5 and carbon 4, delta, which is between carbon 4 and carbon 3, epsilon, which is between a carbon 3 and oxygen 3, then zeta, which is between oxygen and another phosphate of a phosphorus bond. So मेन चेन में कितने बॉन्ड्स आ गए? 1 2 3 4 5 6. अनदर बॉन्ड जिस पर रोटेशन है, कल भी हम बात कर चुके हैं, 7th इज काई बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. सो इतना ही हम याद रख लें तो बहुत है कि जो डीएनए डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस एडॉप्ट कर सकता है, दैट इज ड्यू टू the rotation around 7 different bonds, and 3 major conformations which are adopted by the DNA are A form, B form and Z form. Now moving to the rotation around chi bond, that is glycosidic bond. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर जनरली 2 ही तरीके के रोटेशन हैं वो पॉसिबल है, दैट इज सिन एंड एंटी. सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दे हैव ओनली 1 or 2 स्टेबल पोजिशंस, दैट कुड बी आइदर एंटी एंड सम केसेस बिसाइड एंटी इवन देयर कुड बी अ सिन. सो जैसे अभी ये डायग्राम कल भी हम बात कर रहे थे, इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है. तो दिस इज द सिन एडिनोसिन, where all these groups which are participating in hydrogen bonds, they are on this side. Well, if there is a rotation at this place and these groups they come on this side, then we will say that now it is in a anti orientation. This is now in anti orientation. So adenosine could be in a syn orientation, it could be in anti orientation. Similarly, cytidine here also by rotation these groups they come toward the helix so that they can participate in hydrogen bonding. This is the anti. That is, here we can write down one important thing is that in
nucleic acids, mainly anti conformation is favored. Because that is comparatively more stable in A form as well as B form of DNA, whether it is a purine or pyrimidine. The rotation, conformation around this glycosidic bond is anti. A form, B form DNA, and here you can write pyrimidines of Z form. Exceptionally, it is purines in Z form of DNA, purines in Z form of DNA can adopt stable syn configuration. So purines वो भी किसमें Z form में. Exceptionally they can adopt a syn configuration. Otherwise, rest of all other places, what you will find is mainly there would be an anti configuration, whether it is a A form, whether it is a B form, and even in Z form, if it is a pyrimidine, it would be the anti configuration. So this is, we are talking about the rotation around this bond chi. Then moving further, the sugars which is present in these nucleic acids, sugars, whether they are sugars could be either ribose or these could be deoxyribose. These sugars, they first provide optical activity to RNA or DNA. And second important thing is that these sugars, they are not planar structure, जबकि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो प्लेनर है, प्लेन फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं. It is not a planar structure, mainly it forms adopt a half chair conformation. If it is not planar, एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहे हैं, तो it means out of these 5, 4 carbons they are in ring, and this is the 5th carbon. These are the different carbons. So if it is not a planar, means some position of this ribose sugar should be exposed outside, while there may be some other positions. If you are suppose pulling this 2' toward the front, then 3' will move to back. If you pull 3' toward the front, 2' will move to the back. That is, if you make a, you can say, model of a ribose sugar using a ball and stick. और अगर आप सेकंड वाले कार्बन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हो, तो थर्ड वाला कार्बन आप देखेंगे कि वो ऐसे बेंट होकर ऐसे नीचे की तरफ चला गया. अगर आप इसको ऊपर की तरफ पुल करते हो, तो ये वाला कार्बन अंदर की तरफ चला जाएगा. सो आउट ऑफ 5 atoms, what you find is that out of
5 atoms, most often you find that 4 atoms, they are in a same plane. There is one atom which is would be outside the plane. Either it would be carbon second or it would be carbon third. Now, अगर जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, जिधर की तरफ C5 कार्बन है, उधर की तरफ ही एक कोई कार्बन बाहर की तरफ एक्सपोज, जिधर फिफ्थ कार्बन आ रहा है उधर तरफ वो वाला कार्बन भी आउटसाइड द रिंग जा रहा है, तो इसे एंडो कन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। सी वाला 5 कार्बन इधर की तरफ आ रहा है आउटसाइड द प्लेन, तो जो C3 है या कोई भी कार्बन उसके ऑपोजिट साइड में आउटसाइड द प्लेन जा रहा है, तो उसे एक्सो कहा जाएगा। सो इन एंडो कन्फॉर्मेशन द out of plane atom is on same side of the ring as that of carbon 5, while in exo conformation out of plane atom is in opposite side to ring of C5 atom. So conformations could be endo or conformations could be exo, endo या exo conformation हो सकते। So basically दिस एंडो या एक्सो कन्फॉर्मेशन, जिसको हम शुगर पकरिंग कह रहे हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज राइबोस पकरिंग, शुगर पकरिंग, एंड इट बेसिकली विल डिसाइड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो व्हाट वी फाइंड इज, जो याद रखने वाली बात है, इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए C2 कार्बन इज एंडो, C2 is on the same side of fifth carbon, while C3 is exo, it is outside the plane opposite to fifth carbon. While in case of A form, the condition is almost open in a A form DNA and double strand RNA. Condition is opposite, means C3 is endo and C2 is exo. These are sugar packing is a major criteria on which A, B, Z form they are represented. In Z form of DNA, all purines they have a C3 endo, while in pyrimidines they have a C2 endo. Note down these points, they are very important. बार बार इन्हीं चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर है ए, बी और जेड के लिए। शुगर पकरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So note down this. Moving further. So with this information, now we can talk about the different conformation of DNA. We have already discussed about the B form DNA. The important points about the
A form of DNA is, first, the B form of DNA, if it is kept in a dehydrated condition, if it is placed in dehydrated conditions, means where there is a low water and you can put, let's say, high salt concentration, then the DNA which is in B form DNA, it could be converted to an A form of DNA. Concentration of salt which is required to convert a B form of DNA into a A form of DNA is very high, and it is believed that कि नेचुरली कहीं पर भी ए फॉर्म डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो ए फॉर्म डीएनए के लिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए वो कहीं पर भी फुलफिल नहीं होती. इट वाज इनिशियली जो डीएनए के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कर रहे थे तो वो डीएनए को क्रिस्टलाइज कर रहे थे, और डीएनए को क्रिस्टलाइज करने के लिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ रही थी, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद क्रिस्टलाइज्ड डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो ए फॉर्म डीएनए जैसा था. फर्स्ट मॉडल वुड हैव बीन प्रपोज, जैसे ए फॉर्म कहा गया. लेटर ऑन ये तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए को क्रिस्टलाइज करने की वजह डायरेक्ट जो फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए है उसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, जिससे हमें पता चला, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा सॉल्ट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमें पता चला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है वो ए फॉर्म नहीं है, इट इज अ बी फॉर्म. सो naturally you will find somewhere a form of DNA. This is somewhat unexpected. इसकी उम्मीद नहीं की जाती. लेकिन जहां कहीं पर भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, या आरएनए डीएनए जो हाइब्रिड है उसका स्ट्रक्चर है, वह जरूर ए फॉर्म ऑफ डीएनए से रिसेंबल करता है. सो व्हाट वी वांट टू से इज दैट डबल हेलिकल डीएनए आरएनए हाइब्रिड या डबल स्ट्रैंड आरएनए हैव अ स्ट्रक्चर which is very much similar to a A form of DNA. That is, RNA का 2' OH group do not allow a RNA or RNA DNA hybrid to adopt a B form of DNA like structure. So double strand RNA or RNA DNA hybrid, they form a form of DNA like structure. The important points about the A form of DNA are: it is right-handed like B form DNA. Its diameter is 26 एंगस्ट्रॉम. बी फॉर्म डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम था, यहां पर उससे थोड़ा सा डायमीटर का ज्यादा है. एक बेस पेयर के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर 11 बेस पेयर, जबकि बी फॉर्म डीएनए में 10.5 बेस पेयर थे. और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शुगर पकरिंग के अंदर C3 एंडो है, जबकि बी फॉर्म ऑफ डीएनए में C2 एंडो था. दिस इज अ मेजर क्राइटेरिया. और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बी फॉर्म डीएनए की तरह यहां पर भी एंटी है. मेजर ग्रूव की बात करें तो मेजर ग्रूव यहां पर नैरो और डीप है, जबकि जो माइनर ग्रूव है वह शैलो एंड वाइड है. अगेन दीज आर ऑपोजिट टू somewhat opposite to B form of DNA. So these are some properties of
A form of DNA. Then moving to a Z form of DNA. So if there is some B form of DNA, if B DNA has alternate purine pyrimidine sequence and such sequence get methylated. So if there somewhere, if there is an alternate purine pyrimidine sequence and if such sequence get methylated, then that particular localized stretch of DNA converts into Z form. So बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे सीक्वेंसेस होती है, स्पेशली यूकैरियोट में CpG आइलैंड्स कहते हैं, साइटोसिन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड गुआनिन, फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड साइटोसिन, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड गुआनिन, फिर इस तरह की सीक्वेंसेस जीनोम में कई जगहों पर देखने को मिलती है. ऑब्वियसली ओपोजिट स्ट्रैंड में कुछ इस तरह की सीक्वेंस होगी, यहाँ पर गुआनिन होगा, फिर फॉस्फोसाइटोसिन एंड सो. So these are referred to as CpG islands, which is quite common in eukaryotic system, often present in near vicinity of genes. And if such sequences get methylated at, let's say, cytosine residue, ऐसी सीक्वेंसेस अगर साइटोसिन रेसिड्यूज पर मिथाइलेट हो जाए तो हम कह रहे हैं ये पर्टिकुलर पैच बी फॉर्म से जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के ऊपर अप्लाई होती है. दिस इंक्लूड जेड फॉर्म डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड. द डायमीटर ऑफ जेड फॉर्म डीएनए इज मच लेसर, इट इज 18 एंगस्ट्रॉम. One helix is having 12 base pairs. शुगर पकरिंग के बारे में ध्यान रखें कि शुगर पकरिंग फॉर pyrimidine it is endo, Y stands for pyrimidine, and C3 is endo for purine. Here there is alternate pyrimidine, purine, pyrimidine, purine sequence. ग्लाइकोसाइल बॉन्ड के लिए भी ध्यान रखें, pyrimidine के लिए तो इट इज एंटी, वाइल प्यूरिन के लिए इट इज सिन. सिर्फ इसी जगह पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सिन है, बाकी सभी जगह पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंटी थे. सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कुड बी सिन फॉर प्यूरिन्स इन अ जेड फॉर्म ऑफ डीएनए. हियर मेजर ग्रूव इज वेरी वाइड and shallow. Minor groove is very narrow and deep. So these are some of the important features of Z form of DNA. So naturally Z form DNA is very rare, but there are few examples, especially during gene regulations. If CpG islands they get methylated, that particular stretch of DNA may have a different kind of conformation referred to as Z form. So this is the table which is highlighting the major differences between A form, B form and Z form of DNA. So you can also make this table. This is a summary of A, B and Z form.
Important points are helical sense. A form is right-handed, B form is also right-handed, but Z form is left-handed. Diameter is, for A form it is 26 angstrom, for B form it is almost around 20 angstrom, and for Z it is only 18 angstrom. A form has 11 base pair, B form has 10.5 base pair, Z form has 12 base pair. Helix rise per base pair is not important. Base tilt is also not important. Sugar puckering is again very important. Sugar puckering is again important. In A form, there is a C3 endo. In B form, C2 is endo. In Z form, C2 endo for pyrimidines and C3 endo for purines. This glycosyl bond formation is also very important. It is anti in both A form and B form, but it is anti for pyrimidine and syn for purines in Z form DNA. There is a major groove and minor groove. In major groove for a B form DNA is wide, and minor groove is referred to as minor because it is narrow and it is of intermediate depth. As compared to this, if you move to a Z form, move to A form, instead of wide it becomes narrow and deep, and if you move to the Z form it becomes shallow and almost flat. जो narrow वाली है वह wide हो जाएगी, इंटरनेट डेप्थ की जगह पर शैलो हो जाएगी, इधर की तरफ जाएंगे तो ये डीप हो जाएगी एंड नैरो हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव. सो दिस इज all information about nucleotides and nucleic acids.
रिवाइज किया होगा. So now moving